Namaskar, good morning. Suraj Singh, civil engineer, Bharat, India. Back to you again, sorry gentlemen. Constitution of India, current affairs, Bharat, and situation in Jammu and Kashmir and other issues related to our country. What to say, what not to say every day, same thing arises. But I remember preamble of our constitution, very important. And I again say please read that, very important, otherwise you will not find something good. हम भारत के लोग सत्यनिष्ठा से अपने भारत को गठित करते हैं, सब लिखा है उसमें. We people of this country, having solemnly resolved to constitute our country Bharat India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to its people justices, means justice, then say liberty, equality, and to create brotherhood among all, promote brotherhood among each and every individual of this country. This very important point, which is principle of this constitution, based on which structure, phenomenon, structural philosophy, we have got this constitutional articles which applies to each and every one of us in addition to fundamental duties which you have to abide by. Again, is very important, and these fundamental duties claim, order, mandate that you have to follow what is written in that, and that is very important. Article 51A says again, I'm telling you, abide by the Constitution and respect its ideals, institutions, national flag and national anthem. Cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle for freedom, uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, Bharat, to defend country and render national services when called upon so to provide harmony and spirit of brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to dignity of women, to value and preserve such heritage of our culture, to protect and improve natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement, and children must be educated at the age of 6 and 14. These are our fundamental duties we people of Bharat India, who have solemnly resolved to constitute India Bharat into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly this 26th day, November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. And this is what we are, and this is very important that we are this, and we draw our powers from these provisions, and we have to do rights and duties to dispose of according to this requirement. But we are doing that or we are not. There is a big question mark for every one of us. Honor of this country, Bharat India, a great one. Bharat, Bharat, and Bharat. My Bharat, your Bharat, everybody's Bharat. Reputed country, democratic country, leading country, master country, knowledge country, bravery country, and all parameters, natural wealth, natural blessings, everything, no deficiency. But we have made all this into our avarice and greed and leading to a state where hell exists because of our greed, our avarice, our selfish nature of all citizens of this country. Only country who's sleeping when I call, where there are excess of everything, we have plenty of population, and that is the reason that none of us responsible. That's the problem. If you suppose you give a garden, the public want to ask public to maintain that garden collectively, public shall never maintain that. And if you just assign a job to some gardener, that gardener maintains that. That is what is happening in our country.
We are big country, big people, big politicians, big jobs. Everything is big, but our minds, our conscience, our hearts are not big. We are thinking we are limited. We are confined to ourselves, and that's it. And we confine to ourselves, value of countries set aside. That's happening in our country. We don't respect people. We don't respect sections. We don't respect our minds. We don't respect our first. We are busy in everything. I want this job. I want approach. I want this. Oh, this is my caste pandit. This is my Rajput. This is my SC. This is my ST. This is my this. We are all busy in these types of unproductive parameters which harm us everywhere. Despite having every issue, every power, every property with us, we have natural resources, we have human resources, we have mind resources, we have every resource that is required to progress, to pull this country, to lead this country, to get it updated. But we are not doing that. We are busy in our personal lives, our family lives, our social lives, and that's all. We are not. We are in comparison of others. We are not in comparison to our requirements. Many countries are smaller than us, they are leading because they are not greedy like us, and we are greedy. That's the problem. We are fighting politically, we are fighting socially, we are fighting in every kachra, every garbage ourselves, we are pulling it in every garbage. We are not caring for anything because we are a sleeping society. Every time I say sleeping, sleeping means we are sleeping. We have no hot blood. We cannot fight with our system. We cannot fight with our government. We cannot fight with ourselves. Whatever is given to us, we accept with folded hand, and that's the problem. Country is mine. I am involved in this country. I am in charge of this country. I am all of this country. We have no such thinking. We are only thinking, leave it to others. That's the problem. When you are responsible to other, you are a rubbish person. You have no liability at all. Why you leave to someone else? Why don't you keep a check on that person to whom you have given responsibility? But you shall not do it because you are Bharatvasi, a lazy society. A lazy society, believe a false statement society, liars in this country. They want to loot each other. Same money is there. I want to pull this money. You want to pull that money. Everybody wants to pull that money, and money is broken. That is happening. Your international value is nil. Your currency value is nil. Your engineering value is nil. Your medical value is nil. Where is value? You tell me, except in robbery. This is our Bharat. Our primals are shining. Our primals are master of all world, but we are not following that. Neither we are able to qualify in duties, nor we just want rights, and that's the problem. This is our Bharat. Bharat of 2019. We don't care. We are worried for what I don't know. We are afraid of the government. We are same government we appoint. We are scared of that government. This is our weakness. Government, our servant. Remember, they are not our masters. Again, I am telling you, I am paying and you are paying them. But you are worried of that one for what? Again, I am telling you, issue of Jammu and Kashmir, very important one. You have to take care of that. If you don't take care, it will burn you. It will burn all of us. This issue. This is in a critical state, super critical state. We are not serious about. We are happy. Oh, we have done a lot. We have dismantled 370. We have demolished. This is our stupidity of minds of all of us, without understanding what is that, what is not that. Qualified person, educated person, uneducated person, every person. They don't do anything about that, but they are happy, enjoying, celebrating, without knowing what is that. What is the impact of that? What shall happen after that? We don't know, but we are celebrating. Oh, it has been done. It was waited for 70 years and we got it. What you got it? Do you know? Did you know? Do you know what you got it? What you got? Tell me. Shall someone tell me what we got? Because you don't know, you can't tell. Even if you ask Prime Minister and President, what you got, he will not tell you what I got. Just we did it, that's it. Means we want to keep ourselves in darkness, and that is our problem. We want to keep everything in darkness, but we want to show to the world that we are shining. That's we are breaking our heads, legs, and body, and we are celebrating.
Many people write. Believe me, I feel that these people have no knowledge at all. They send mails to me, they return post to me, and I feel sorry for them. Because these people are very badly informed about facts. And when you are badly informed about facts, you cannot talk of facts, you cannot reach a decision, you cannot reach conclusion on that. You may be very small person, you may be big scholar in this country. We are having lacuna now. We cannot read documents. First lacuna, we don't believe documents. We believe in this tongue and hearsay because of we are using your mobiles. We use like this and enjoy. We are not using this. This is very, very important and we are not using this. We don't read documents, we don't think, we don't analyze, and after you don't do all these three activities, you cannot do anything. That's the problem for every one of us. And these politicians are making abuse of our lacuna, our weakness, our loopholes. No politician is so powerful that can fight with his citizens, but they are fighting with, they are befooling us in each and every affair, all politicians. Many times I've explained that we have to understand, we have to learn, we have to take time to all these things, for all these things, but no. Because we are used to objective system of examination, and that has caused all evils. We cannot read, we cannot write, it tick and tick and tick and tick and tick. That tick, 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 tick has ticked us. I talk to many people, all levels of people. I ask many questions. I ask about this question also, JNK, which is current one, burning one. Believe me, all sections of people, they are not clear what has happened, but jumping, playing, dancing, zooming. For what? For that which they do not know. Unfortunately, they do not know, and they do not know as well. They do not know. I had long discussion with some of my relatives, kids, young kids, age of 40, 35. I asked them, what do you know about this? You said Modi has done and something they must have done. I asked cross question, they don't have an answer. They don't even know what has happened. But they are happy. Oh, it's now ours. What is your ours? JNK is ours, we can buy land there. Okay, go and buy. How can you buy? Just tell me. But they don't know anything. I don't know anything. When you don't know anything, how can you buy that land there? Do you have any plan? No plan. But because they said we buy, you buy. This is called stupid mind, idiotic people. They don't use brain. And if you don't use brain, you go to drain, believe me. If you don't use brain, you shall go to drain. This mathematical principle. If your brain works, your brain doesn't work. We are not thinker society. We are a dying society. Believe me, in some days we will die mentally. We will die. We will not have any capacity of mind to think. We are slaves of mobiles. We are slaves of without writing. People used to write in past. They used to write, they used to think, they used to analyze, and they used to, scientists have not become scientists because they used to think they have become scientists. But we don't want to be scientists. We want to hollowists. We are vessels now, hollow vessels. You know, hollow vessels. We are like that. Our country is going to be hollow vessel, nothing else. No container, no water, no liquid, no mallet. Just empty vessel sounds much, we say. So we are empty vessels sounding much. Our education, you can see, talk to some person who has passed schooling, doesn't know anything, marks are 95%. He doesn't know mathematics, marks are 95%. He doesn't know any sentence translation, marks are 95%. Everybody is intelligent, everybody is married, but knows something. This is happening. We are not used to sequential understanding of our documents. Even not only this document, I'm talking every document. They just take one document, keep here, okay, take one document, keep there, don't look at that later on. And this happened with me in my life also. My family disturbed me.
because of documents. In some case of my house, it took me 8 years to get completion of some construction of my house. Believe me, 2000 to 2008, I was not here in this country. 8 years it took us to get just completion of small construction because of without understanding of documents, they could not do anything. No value of documents. And same thing is being progress and multiply, thrive now. Now my question is the documentation of Jammu and Kashmir. How many of us we know this? I am sure not even more than 1%. And that is too high, I'm telling 1%. Because 1% also 1.3 crores people. I think not even 20,000 people know about this, or 10,000 maybe who know about this. But we are happy. This is called idiot people. Yes, openly I'm saying we are idiot society, because idiot society sleeps, and we are non-serious because we are happy to be non-serious. See, our education is targeted only to one point, that we should get job, and that's it. Purpose of education is not job alone. Purpose of education is development of mind, development of contemplation, development of spectrum here, broad-based understanding, analytical understanding, thinking understanding, destination understanding, formula understanding, conduct understanding, governance understanding, procedural understanding, social understanding, atomic understanding, every understanding. Do we have that? We don't have that. Our only destination is grab a job, marry, live, generate children, bring them up, let them be big. After that, my life is settled and their life is settled. We are only having this kind of level living, comfortable living, you can say. After that, nothing. Who shall take care of your country? Who? Tell me. If you think that way, if you live that way, why don't you take a strain to worry about your country? You are living in this country because of some people, and those people are no more in this country. Had those people not worked for you, not struggled for you, not sacrificed their lives for you, still British would have been here. And you are not worried for those people. You are worried for yourself. If Gandhi was not there, Subhas was not there, if Bhagat Singh was not there, Afridi was not there, and like that, lakhs of struggles, people, freedom fighters. Had they not been there, still British would have been here. Do you know that? But what those people got, because for your savior, they were your savior, but what they got, nothing, and you are still not worried about them. You are worried about yourself only. You are not taking off that item, that is this country. They are not taking care of this country. These guys delivered to you this country, and you are not taking care of this country. You are busy in your own life, in your own world. Oh, as if I am born free and I shall remain free forever. Such freedoms are also allowed to go if you are so serious. You are not serious, this freedom will not stay forever. Believe me. You think you can, if you are not serious, there are so many serious people who can hold you. And this is going to happen if you don't worry about that. Don't think that something is permanent. Nothing is permanent in this world. Change is life. Change for change. Change for change for change. Change and change and change. Change is life. And who is responsible for change? Have to see that. Who will see that? Who is responsible for change? People are responsible for change. Who is highest responsible? They are highest responsible who are professionals. They are first responsible. They can change society because they are intelligent. They have brains. But no, we shall not do that. We call in our profession engineers for agent of changes. Yes, I am engineer, and all those engineers, whoever may be talking to me or who are in my field, all those colleagues, we are all agents of change. But are we changing? That's the question. Engineers are agents of change, but we are not really working to change. We are working to compromise. We are working to adjust.
We are working to, okay, chalta hai yaar. We are working on that direction. And that is true. That's fact of life. How many of us take risk? How many of us endure? None of us. And it applies to all sections of society. Nobody is interested in change. They are interested in compromise. And I hate it when somebody says compromise. Compromise for what? Can you compromise your life? Can you compromise your death? If somebody asks you want to die, shall you die? You will not die. You will never expect to die. So why you want to have your country die? Why you want to have your country die? Tell me. If you are not able to, you are not happy to die, you are not able to see your people of family die, why are you not caring if your country is dying? Our country is dying. Believe me. Day by day, hours by hours, we have been dying as a nation. You may call we are superpower, we are no, you are not doing that. Your efforts, your works are not indicating that we are going into that direction, and it is a fact. In every sector, not only economy, every sector we are dying. And we are happy. We are compromising. We are wasting material, we are wasting our efforts, we are wasting time, and we are wasting everything just for sake of we should have jobs. Development of family means you should have education, you should have a job, and you should settle somewhere and enjoy your life. This is our definition of economy and our society definition. You must have every facility in life, and that's called development. No, this is not development. Having facility is not development. Your contribution to your country is development. Everybody must think what contribution he has given to this country. If you are not contributing anything to country, contribution does not mean money. Contribution means your efforts, your thoughts, your dissemination of knowledge to your people, working on that knowledge, getting results, doing operational research, getting further improvement is called continuous development. We call in profession CPD, that is called continuous professional development, and that makes a country, that makes a society, that makes an institution, that makes a profession. We are lacking in every field. Take example traffic, we are not worried about. If somebody asks why don't you seat belt, oh no problem, police is not there. And helmet, no, there's no police. When police come, I will. This is our seriousness. You are worried of a policeman, you are not worried for your safety. You think use belt only when there's no challan. You are worried about challan, you are not worried if you die, what happens? You are taking risk of death and saving risk of 100 rupees or 200 rupees because you have to pay the policeman. Same thing to helmet. You are not wearing helmet, you are just driving motorcycle or bike without that because there's no policeman. If this is our thought, can we progress? Means you are taking your risk just for small item. If you are for your safety, your risk is reduced. But you are not concerned about that. You are ready to die just to wear a helmet. You don't want to wear a helmet, you want to die. If your contemplation is that, if your scale of thought is that, what is the meaning of your life? What is the meaning of this country? What can you do to this country? Nothing. If you are not happy with this country, means you don't want to take your safety. How I am sure you will take safety of myself? Sorry. How will I take safety of myself, others, if you cannot take your safety? It applies to everybody. To me also. If sometimes I am careless, I feel I did mistake. Why? If the speed limit is if it's 80 degree, I am driving 120 degree. Why? If there's a red light, why I would jump? If some car is coming from the street, why street guy move without looking at who's coming there? There can be another truck and come, he doesn't think of it, just do it. Not even looking at that and just put in and drive into main road. Where is seriousness? Where is seriousness? No seriousness. If you cannot have seriousness on the road, you cannot have seriousness at home. You cannot have seriousness everywhere. This I just gave you an example. It's not that only road I'm talking. I'm talking everything. Everything I'm talking. I'm helping pollution. I'm helping natural death. I'm helping everything. I'm spreading dirt. I'm spreading all diseases. Everything is there, and I'm spreading all, polluting all. My question again is, and my talk is not about this. My talk is about our current situation.
If I am citizen of this country, you are citizen of this country, what is our duty? Our duty is to take care of Constitution, to do for Constitution, to take care of this nation, to take care of every person in this nation. If we say that we are a family, then we have to take care of family. I'm not saying we have to spend money, but we have to spend our sentiments. We have to spend our thoughts. We have to think seriously. We have to talk for each other. We have to try to remove some errors there, and we have to amend some wrongs there. We have to bring it to reinstatement. But no, we are not. We depend upon government as if government is our owner, government is our master. Government is our servant, and government does wrong. I have right to speak. You are doing wrong. Tell me how I can explain this is wrong. You do it right. This is your duty. Government doesn't mean everything. We are wrong because we are super government. If my servant does wrong, I'll stop him. Why are you doing this? Is right or wrong? Government is your servant. But you are not doing it. You are not even thinking of that. Oh, he will do everything. How can you say he will do everything? How can you say that? Error can be done by everybody. Remember, everybody does errors. But I don't mind that also. I mind if errors are not tried to be rectified, tried to be remedied. That is important. Errors would be there. It's human being. We are all human beings. However you work, however high intensity, however high mind, individual approach is not a collective approach, and collective approach is not individual approach. That is the problem everywhere, whole world. Difference of opinion, difference of thoughts. That's important for democracy. Deliberations, brainstorming, that is also important for democracy. But dictatorship, when comes in, everything breaks. One dictator is enough to break whole society. One dictator is enough in 100 crore people. One person is enough to break everything. And that is happening in our country. It has been happening. And we are not serious about that. I don't know why. It is not one person's country. It is country for everybody. I have full right to say something if there is something wrong. Why should I not say? My question to myself is, my question to you is, why don't you say something when you find something wrong? And if you find something wrong, you should write it, you should speak it, you should fight for that. But only then if you find. And if you don't find, you should do. Are you born only for some job? Just tell me. Are you born to do some job for some company or government, someone else, where your job? There is no other work for you after job. There is no thought for you after job. Means you have two locations, either your family and a job, and that's aim of life. Is this only a life? If your neighbor is suffering, it's not your duty to check. If your state is suffering, you're not your duty to check. If your other state is suffering, your life extends even to outside of this country, You have a responsibility to the world also. You are just saying Vasudev Kutumbam only for speech or for mantras. Vanaspati, we are talking about Vanaspati, you are talking about space, you are talking about everything. But you are not doing for that. You are not serious about that. You are only talking. And talking doesn't mean any walking. Don't talk, walk better. Walking is better than talking. Talking what this 5, 10 kilogram, 9, I'm doing this, I'm not doing nothing at all, just speaking nonsense. Walk and talk. Just not talk. You're not walking, you're sleeping, you're not thinking. If you walk, you're fearing. That's what I'm saying. If I speak about others, it's my right. No one can stop me from that. Till I make a mistake or till I make illegal act, no one has right to stop me. He may be president or he may be Supreme Court or anybody. If I'm not wrong, no one holds me. That is my right, fundamental duty, according to 51A Constitution of India. No one has a right to stop me if I comply with that. This is my understanding. What's your understanding? Don't be slave of yourself. Don't be slave of your government. We are free country, free within limits. Of course, we are ensured our rights in preambles. It's security of rights. Read that, understand that. Maybe lawyers don't check that, judges don't read that, analyze that.
We are secure justice, liberty and equality. This is preamble of Constitution and we have to uphold that. We have to respect that. If I am within these limits, no one can stop me from talking and writing and speaking and supporting others and condemning government, because it's my right, preamble right. Articles comes later on, preamble is first. So this right was given to me, provided I do duty, I serve my nation. If I serve my nation and care for others, nothing is wrong in that. I am power to do. That is my understanding. What is yours? That's all. Means you want to survive for sake of money. Money is your basic right. It's your life maintenance, but not slavery. Yes, you are doing some job in private company, in government, in multinational, or doing freelance in somewhere, or running a shop or a small business. It's okay. No problem that one. That is your livelihood. But that all depends upon this country. If this country is free, we are enjoying this right, it's because of some sacrifices. But we are not caring for that. We are not valuing that, because if you get something free of cost, you don't value that. You got this freedom free, you did not do anything, your parent did not do anything, so you must enjoy these resources, enjoying this complete power, everything this country is for you enjoy, and you say, oh, no problem, everything will okay. You elect some people and let them, you want to share, you want to think that they should do everything for you. They will not do everything for you until you force them to do for you. But you are not forcing them, you are just liberalizing them, do whatever you want. We will talk to you after 5 years, and that's another problem. Your job is not simply for voting. Your job is checking. Your job is surveillance. Your job is supervising. Because this is my country and your country. I cannot leave this country to hands of criminals. No, I cannot. But I have left it. Shame on to me and you. We elected 233 criminals and they are working in Lok Sabha. Your achievement, my achievement, destiny of this country they are making. They are writing destiny. These 233 people and more maybe. Criminals background, they are writing my luck, they are writing your luck. This will be your job, do it. This is what law I am making, this is what order I am giving. They shall order us. These criminals. First country in world, 45% criminals in a house, our house, Lok Sabha, and we are happy, so happy. This is our weakness. We are ready to accept 1.25 crores, say this crore population in Jammu should be jailed for weeks and weeks and weeks, and we are not speaking. This is people we are. You think we are people? This is called people or what we are? A dead society. Are we people? You think you are not people. We are not people. What is that? If you are arrested like this in your home for weeks and weeks, what shall happen to you and to me? We are not contemplating. We are not thinking that. No problem. Let them die. Let them die. What happens? No problem. Let them die. They are Muslims. They better go. This is our contribution. Our thought is critical, dangerous thoughts we are having. Believe me, all freedom fighters made mistakes, they liberated us. We are qualified, we are eligible to be enslaved again. And we were enslaved rightly because we had no courage, we had no system, we had no ambition to be alive in new country. No, we were not. And today also same thing, no difference. No difference at all. No awakening has come to us. No awakening has come. We cannot openly talk, we cannot discuss. We are fear. Oh, no. Don't talk this, somebody will listen to me. And see these television channels, slaves. They are not working in television channels. They are working as Modi advertising machines, Modi advertising agencies, spokespersons of Modi. They are not working in channels. I hate this news they give. Useless news, no brilliance, no academic talks, no debates, no brainstorming. Just use the stocks every day, every month, every hour. TVs must teach people, channels must teach people, but they are teaching rubbish. And we are paying for that. We are paying them to teach us rubbish.
This is our country, Bharat. We don't want to check anything. I many times talked to you about instrument of annexation of Jammu and Kashmir. Many times I talked, but you don't remember, you don't read that, and that's the problem. And again, I'm talking to you about that just to make you bored, so that you should feel bored. Because you should feel bored, you cannot understand that. This instrument of accession is governance of the state of J&K, and that is very important document. Because this document, I read to you what it says mainly. I will not go to talk about all in that, only a paragraph of that, which gives understanding that what this document is. And that says, it says that the terms of this my document, the terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of Act or of Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. This is point number 5 or article number 5 in this document. And you can say other one is number 6, which is nothing in this instrument shall empower Dominion legislature to make any law for this state authorizing compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should Dominion for purpose of Dominion law which applies in this state deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire land at their expense, or if land belongs to me, transfer it to them on such terms as may be agreed or in default of agreement determined by an arbitrator to be appointed by Chief Justice of India. And number 7 is nothing in this instrument shall be deemed to be a commitment in any way as to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangement with Government of India under any such future constitution. And eighth is nothing in this instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this state or save as provided by or under this instrument exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as ruler of this state or validity of any law at present in force in this state. And this is instrument of accession, which is very important to understand first. So far, whatever has happened, we all know that there have been reorganization of Jammu and Kashmir. There have been certain repeal of acts, just like CO 48, they have replaced from annexure of Jammu and Kashmir, constitution application of Bharat constitution to state of Jammu and Kashmir. But specifically, nobody has clearly mandated till now what is real status of instrument of accession. But I am sure that this either have two situations, either it is restored or repealed. Question is that you cannot repeal it. You cannot repeal it. First of all, you have no right to repeal it because this is not your alone agreement. This is agreement between two nations, and at that time nation was India, Bharat, and one nation was J&K state. There were two nations. They signed this agreement. It's not single-handed agreement or single-handed statement. It's a bilateral agreement between two nations. So you cannot repeal this on your own. And if you repeal this, you lose everything. If our government, as Bharat today, if we say this is repealed, this means this got no legal value, and when this got no legal value, whatever comes with this has gone. Whatever came with this to us means J&K land came to us, the people came to us, that all is recessed, means gone back. Accession and de-accession, it is good thing. Decession has done. And if you say no, this has not been repealed, this is still live, and then you have contravened this, you have gone ultra vires of these provisions, and which is your fault. You cannot go ultra vires. You cannot go ultra vires, which is also invalid. It's unconstitutional, whatever you done. We have to understand such issues first.
before going further into explanations. Fine, I think you are clear. First of all, this is independent agreement of your constitution. Our constitution is not accepted in this agreement, means this agreement has no value as far as our constitution is concerned. This means whatever is done under our constitution is illegal to an extent this instrument is concerned. So whatever they did is all illegal, irrespective of president signed or whoever signed. And then you cannot change anything of this constitution, this instrument. If there is some change, another document should come. Where is another document? It didn't come. Issue of land is also there. You may say you are free to buy land. How can you buy land? It's not allowed in this governance instrument. Your approval, your parliament approval got no value at all, because this is governing document between you and that nation. Try to analyze like this. It's not simply one article we have removed or we have changed and you got it. You did not got it. You have been stupefied. Government has stupefied you. They have befooled you. Fully, absolutely. They did nothing to this. They gave you nothing. They just kept you in darkness, and that's all. Now they are going to every country. Our Prime Minister, AVM Prime Minister, is going to everywhere. What's the function? Shall UAE solve this? Shall America solve this issue? Shall France solve this issue? Shall UK solve this issue? Who shall solve this issue? You say it is our internal affair. Yes, it's your internal affair. But to what extent is your internal affair? What extent is yours? Can you define? You have not defined anything. You are going to them talking, oh, is not this our internal matter? It is not your internal matter. It is matter between two nations. First of all, question is who is stakeholder in this? Let us discuss that way. Forget Pakistan. Who is stakeholder in J&K? Top stakeholder, real stakeholder. Stakeholder is public of J&K and no one else. That is first stakeholder. We are custodian of J&K, like that, according to this document. I'm not talking about CO 48, what happened on that, how many ordinances were signed since between 47 to 1954. That is another story. Question is, the document says that still I am sovereign and you cannot delete me from that status. Okay? Okay, sovereign means public is sovereign. This means it doesn't mean king means king. King is public. So did you think for public of J&K before acting as you have done? You did not do that. Means you condone this agreement, you condone this treaty, which is international treaty, and you are treating people according to your wishes, your mandate. Who gave you this mandate? You just got yourself. You cannot get it yourself. Because you have to regard treaty, you have to regard instrument. What is contained in this instrument, France president doesn't know. Maybe their officers know or their old people know, but those who are in power now, Trump doesn't know about this until he is told or he shall be told. Same thing applies to all other countries. You talk to them, it's meaningless. No meaning at all. Because your people don't know about this. Maybe you also don't know about this. Who knows? Maybe our president is also not knowing of this. Who knows? Signing is one thing and knowing is another thing. That is what I am stressing. We have to understand first everything. Just taking a drastic action, atom bomb type action without any study leads to such type of situation we have come today. Today, our government and ourselves, leave government, we as Bharat are standing on a road block, on a road crossing. We don't know where to go north, where to go south, or to go east or west, or where to go. We don't know. There's a solution, no. There's no solution at all. It's 3 weeks now, since 5th of August and today, 27th of August. Around 3 weeks, we do not have a solution. So why did you create such a problem that doesn't give any solution? Without solution forecast or vision, you just took one step without any, and just means you just started a car, you applied clutch and
You applied brakes. That's it. That is it. You did not start car. Car is not running. Your vehicle is not running. That's happening in J&K. It's not running. There's no smooth life. There is no life. And how long? This means we have suppressed certain people without knowing how to get them up again, how to bring them to reinstatement. No, they cannot be reinstated. So what is purpose we did? Just to please those people who don't stay in JNK. We did it for these people or for JNK people, for whom our decision was made. Every person has to think. It's not for one person, two person. It's question of whole nation. Today, situation is very critical. You should realize that. Don't celebrate it. It's not celebrative affair. I have no right to celebrate until I have a solution. This country has been brought to a near state where war starts. We have brought this country to that status. That silver lining. If you cross that silver lining, war awaits us. Is it wrong? Other party, who's our enemies, already warned us, and people are saying this is just game, they cannot do anything. Why do you think that? On what basis you are saying they cannot do anything? Are they not country? They are your enemies since 1947. They can do whatever they want. Because they already did wars with you. We faced, and they can again impose war on us. What do you do? We will defend ourselves. But why to reach to that level? Who is interested in wars? I am not interested. Are you interested? If you are interested in war, there is no definition of fools. Wars is not a solution. It destroys everything. Your side and enemy side, both. Both suffers. War is it's breaking, it's killing. So we don't need war. We need solution. Where is solution? Today, there is no solution for this problem. And if a problem continues 2 days more, it will be around 1 month. And if a problem which has no solution, has no vision, what is meaning of that solution? Tell me. Why did we resort to that step? My still idea is that. I'm not talking about dynamic ideas, my still idea. Because the dynamic means a little difficult for you to understand. Why are we having no solution? And who is responsible for that? Or how many days more we will have to keep very less part of this country? Because it's not simply this part of country that suffers. Whole country is suffering because of that. Whole country is suffering. Tension is there. Depression is there. Worry is there. After all, solution has not come. If there is no problem, there is nothing else, everything is right, fine, no problem. But we are in problem. If suppose there is war break out, then is it easy in 2019 to do all this? No, it's not easy. Loss and loss and loss. Even if you win, it's loss. Because destruction would be there. It leads to destruction, not to construction. Whoever be there, destruction on enemy's side, destruction on your side. That's why I'm saying, why don't we think how to solve this problem? Why should we leave only to our government? Because government is our representative, nothing else. We have to face in future, not government. This government shall go, some other come. They will blame that and they will blame that. This happens. This government blames previous government and previous government blames previous government, and this continues here like that because nobody is ready to share responsibility. And when there are people who don't share responsibility, nothing moves further. Blame game goes on, and that's all. Nobody wants to take responsibility, and we don't want to say that situation.
Why should we like to have that situation in our country? No, we don't need that. अब मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ आपको, कुछ लोगों के लिए जो शायद इंग्लिश नहीं समझते हैं। हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्या पा लिया हमने, खुशी मनाते हैं, कूदते हैं, दिवाली मनाते हैं। मनाइए, मनाइए दिवाली। आप दूसरे मर रहे हो, आप खुशी मनाएं। दूसरों के घर पे बंदूक रखी हो, आप खुशी मनाएं। यही तो है हमारा कल्चर। भारत इसी कल्चर से तो आगे बढ़ रहा है। एक को गोली मारो, दूसरा खुश होता है। एक को कत्ल करो, दूसरा खुश होता है। कोई किसी को मौत दे देता है, मार देता है, सब कुछ वाले को, उसको जेल नहीं होती, उसको हार पे रह जाते हैं। यही तो है हमारा कल्चर। एक को मार दिया, वो जेल से छूट के कातिल आता है, जमा उसका फांसी की सजा नहीं होती है, सजा नहीं होती है, कि सबूत नहीं मिलते हैं, और उसको हार पे रह जाते हैं। आइए साहब, बहुत अच्छा किया था आपने उसको मार के। ये तो हमारा कल्चर हो गया है। हद होती है गुंडागर्दी की भी, हद होती है बदमाशी की भी, हद होती है समाज के सोच की। क्या सोच बन गई हमारी। किसी जमाने में ना हिंदू को बुरा कहते थे, ना मुसलमान को बुरा कहते थे, किसी को नहीं कहते थे, आराम से सारे रहते थे। आज एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है एक दूसरे को। उस मोड़ पे आ गए हम। अरे मैं हिंदू तो मुसलमान है, बकवास ना कर। अरे मैं हिंदू तो दलित, बकवास ना कर। आज ऐसे हो गए हम। कोई किसी का मंदिर गिरा रहा है, पुराने आदमी का, दलितों का। कोई कुछ कर रहा है, कोई राम मंदिर बनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। इसी में हम घुस गए हैं। भारत की चिंता किसको है? किसी को नहीं है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई जम्मू में जमीन खरीदना चाहता है, कश्मीर में कोई वहां से लड़के से भाग के शादी करना चाहता है। इसी में तो रह गए हम। इसीलिए देश को आजादी मिली थी। उन्होंने इसलिए दिलाई थी आपको आजादी कि ऐसे करना हमारे जाने के बाद। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चे ऐसे होंगे, इस लेवल के होंगे, हमारी करी कराई मेहनत पे पानी फेर देंगे, खून डाल देंगे उस पे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। कहने को हम राष्ट्रीय गीत भी गाते हैं, हम भारत माता की जय भी करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं भारत कौन है। हम नहीं जानते भारत कौन है, हम नहीं जानते राष्ट्रीय गीत क्या है। हम खाली नारे लगाने के लिए जानते हैं राष्ट्रीय गीत, जनगण मन, सब उसी के लिए जानते हैं हम। वास्तविकता में हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि राष्ट्रीय गीत की पहली लाइन क्या कहती है, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। इसी का मतलब जान लीजिए, बाकी को छोड़ भी दीजिए एक बार के लिए। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता क्या कह रहा है आपको? कभी सोच रहे हैं आप? एनालाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप नहीं कर सकते। करेगा वही जो सीरियस होगा। जैसे सोते रहना है, सुबह उठ के जॉब पे चले आना है, फिर शाम को दारू की बोतल पी के फिर सो जाना है, वो आदमी क्या सोचेगा? दारू सारे पीते हैं, मीट सारे खाते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। क्या सोचेंगे? क्या उम्मीद लाएंगे शराबी से आप? अरे शराब पी के और महाभारत में जुआ खेल के ही तो सारा युद्ध हुआ था। तो वही एक बड़ी महाभारत तैयार हो रही है। जय श्री राम के नारे लगाते हैं, राम की बात को मानते नहीं। श्री राम की बात को आगे पीछे नहीं फॉलो करते, जय श्री राम के नारे सब लगाते हैं। जय श्री राम का मतलब नहीं जानते। मतलब जानते होते तो ये गुंडागर्दी नहीं होती, ये कत्लेआम नहीं होता, ये दूसरों के रेप नहीं होते, औरतों के, बच्चियों के, ये कभी नहीं होता। राम की बात मानी जाती तो वो नहीं मानेंगे, पर नारा लगाएंगे जय श्री राम, नारा लगाएंगे भारत माता की जय। भारत माता को नहीं जानेंगे कि भारत कौन है और माता कौन है। नारा जरूर लगाएंगे, वंदे मातरम भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन मतलब नहीं जानते। ये नहीं जानते कि देश किसका है, भारत माता कौन है, ये हम नहीं जानते। नारा लगाएंगे भारत माता की जय। अरे जान तो लो, भारत माता कैसे कहते हैं? मुसलमान भी भारत माता है, और हिंदू भी भारत माता है, और सिख ईसाई भी भारत माता है, और दलित भी भारत माता है। हर भारत माता है, यहाँ कोई अलग नहीं है। हिंदू ही भारत माता नहीं है खाली, भारत को लोग को भारत कहते हैं। खाली जमीन भारत नहीं है, लोग भारत है यहाँ के। और लोगों को आप एक दूसरे को मार रहे हैं, तो भारत माता को मार रहे हैं आप। भारत माता की जय भी लगा रहे हैं श्री राम को। श्री राम ने कब कहा कि लोगों को मारो, लेकिन आप मार रहे हैं, और श्री राम के नाम पे मार रहे हैं। लानत देते होंगे आप पे श्री राम भी, कि कैसे मैं गंध को पैदा करके आया हूँ वहाँ, ये मेरे वंशज है। ये कोई अपने को राम का वंशज प्रूव कर रहा है। अरे राम का भी वंशज, सब राम के वंशज हैं। पूरा देश राम का, पूरा विश्व राम का वंशज है। राम एक देश के नहीं थे, राम पूरे विश्व के मालिक थे। भारत कहा जाता था पूरे विश्व को, खाली राम इसी भारत के नहीं थे। ये समझ लो पहले,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, विष्णु ने क्या कहा था, कृष्ण ने क्या कहा था, राम ने क्या कहा था, पूरे भारत को, पूरे विश्व को कहा था। तो तुम्हारे लिए नहीं आएगा, खाली फालतू नहीं बैठा वहां पे, सबके लिए आएगा। जब दुनिया में पाप बढ़ेगा सबके लिए आएगा वो ठीक करने को। इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती। बनते हैं बड़े आरएसएस वाले, बड़े बनते हैं बीजेपी वाले, एबीसीडी आती नहीं धर्म के बारे में। हिंदू कहते हैं अपने आप को, हिंदू का मतलब तो जान लीजिए पहले। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं दुनिया में। चैलेंज है मेरा, कोई दिखा दे कहाँ लिखा है, किसी किताब में लिखा दे धर्म कहाँ लिखा, हिंदू है कि नहीं है, दिखाए मुझे। मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज सबको। कोई धर्म नहीं है हिंदू नाम का, कोई देश नहीं है हिंदुस्तान नाम का। धर्म है सिर्फ, धर्म या अधर्म, दो ही धर्म होते हैं। आप सही काम करेंगे तो धर्म कहते हैं उसको, गलत काम करेंगे तो धर्म कहते हैं। यही है और कुछ नहीं है। इसको हिंदू कह लो, उसको कुछ भी कह लो, आप क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। गलत काम आप करते हैं फिर कहते हैं हम धर्म वाले हैं, हिंदू हैं। शराब आप पीते हैं, लड़कियों को रेप आप करते हैं, सारे कर्म आप करते हैं, स्मगलिंग आप करते हैं, झूठ आप बोलते हैं, क्राइम आप करते हैं, हेराफेरी आप करते हैं, फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू आप, कैसे धर्म मानते हो आप? राम ने कहा था चोरी करो, राम ने कहा था बदमाशी करो, राम ने कहा था रेप करो। कब कहा था? क्यों कर रहे हैं आप? राम ने कहा था किसी को पकड़ के मार दो, उनकी जमीन छीन लो, उनको दबा दो, उनको कर्फ्यू लगा दो। कब कहा था राम ने? भारत माता की जय करने चले, भारत माता की एबीसीडी जानते नहीं है। शर्म आती है ऐसे लोगों में मेरे को। अरे देश को बनाओ, देश को तोड़ो मत। तुम्हारे बस का आजाद करना नहीं है दोबारा। अब कोई नहीं आएगा गांधी सुबह से यहाँ तुम्हारे लिए लड़ने, कोई नहीं आएगा। उनकी आत्माएं रो रही होंगी कि मैं क्या करके आया हूँ। उन्होंने तो सेक्रीफाइस कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना, और देखे गए कुछ और हम उसको लुटा रहे, तोड़ रहे, फोड़ रहे अपनी चीज को, दी हुई को। क्योंकि हम कुत्ते बिल्ली की तरह रह रहे हैं, इंसान की तरह नहीं रह रहे। हम इंसान की इज्जत नहीं करते, कुत्तों की इज्जत करते हैं, बिल्ली की इज्जत करते हैं। उनको घुमाते फिरते हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन देश के बारे में नहीं सोचते। लैट्रिन कराते फिरते हैं सड़कों में, सुबह जाए तो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स, देश के बारे में नहीं सोचते। उनके लिए टाइम है उनके पास, देश के लिए टाइम नहीं है। देश को समझते भी नहीं है वो कि किस किस चिड़िया का नाम देश है। हम सोने की चिड़िया थे, अब नहीं हो, अब बेवकूफी की चिड़िया है आप। बनते हैं भारत के हम लोग, भारत का नाम भी नहीं जानते, भारत की संस्कृति भी नहीं जानते। जो पंडितों ने कह दिया मान लिया बस। पंडित क्या जानते हैं बेवकूफ बनाने के अलावा? नारियल चढ़ा दो, उस मंदिर में ये छोड़ाओ, वहां पर ये करके आ जाओ, तुम्हारी बला टल जाएगी। अभी कल बोल रही थी एमपी, बीजेपी की एमपी, अजी ये मृत्यु जो हुई है उसकी वजह से, तंत्र की वजह से। बताइए कौन सा तंत्र बताया था? मारक तंत्र। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मारक तंत्र। एक तंत्र पैदा हो गया है बीजेपी का, प्रोडक्शन डेवलपमेंट कहते हैं उसको, मारक तंत्र है। उससे मारा जाता है। उससे सुषमा जी को मारा गया, उससे जेटली साहब को मारा गया, उससे और पता नहीं किसी और के भी नाम से जो मारे गए। आप बताइए, ये तो हाल है इस देश का। मरना को मर भी जाए तो तंत्र ने मार दिया उसको। तो तैयार है ना, आप भी चिंता ना करना, तंत्र फिर आ रहे हैं, अभी कई तंत्र आएंगे। कमाल का देश है यार, ये देश है क्या बकवासबाजी है। एक एमपी जो क्रिमिनल है, चलो एमपी आप बन भी गए, तो कैसी गधा छाप बात कर रहे हैं आप कि मारक तंत्र से मार दिया गया, और मेरा गुरु कह के ये है कि बीजेपी वालों को मारा जाएगा। अरे क्या बात है आपके गुरु तो भैया, तो रविराज की जरूरत ही नहीं है, तो विष्णु की भी जरूरत नहीं है, ब्रह्मा की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। आपके गुरु सब कुछ है। और आप सच्चे धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको तो भगवान का काम मिल गया। आपके तो गुरुजी बता गए कि बीजेपी वालों के लिए सारे आ रहे हैं, भैया बच के रहना, बीजेपी वालों सब बच के रहना। मोदी, ये अमित शाह और सब वो आ रहे हैं मारक तंत्र वाले, बच के रहना। रेड लाइट लगा दो तो पकड़ लेंगे आपको आगे। कृष्ण के टाइम में होता ना कि 8 पुत्र आएंगे, वो मारेंगे, 8वां पुत्र। तो भैया मारक तंत्र आ रहे हैं, बच के रहना सब लोग। ये मत कहना बताया नहीं, धंधे है देश। मतलब ये कहाँ जाएगा देश? एमपी कैसी बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? यही साइंटिफिक डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज में यही लिखा है कि मारक तंत्र को चिंता करो या दूसरे तंत्रों की चिंता करो। अरे इतनी शक्ति अगर इंसान में होती तो सबको मार या जीतने देता। अगर मारक तंत्र है तो जीने का तंत्र भी होगा। अगर वो मार सकते हैं तो आप जिवा दो ना उनको। बस ब्लेम करना आता है, ये कांग्रेस वाले करा रहे हैं, मारक तंत्र लगवा रहे हैं। ये हद हो गई यार, कांग्रेस कब से इतनी पावरफुल हो गई? मेरे को तो कल समझ आया कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि मारक तंत्र लगवा देगी।
बहुत खुशी हुई एक तरफ से मुझे कि ऐसी शक्तियां हैं कि वो मर सकते हैं। भैया फिर दूसरी शक्ति भी होंगी, अगर मारने को जिंदा भी जाने वाली होंगी तो वो मारक तंत्र लगाते हैं, तो आप जीवन तंत्र लगा दीजिए ना उनपे, बात खराब हो जाए। आप उनके पे मारक तंत्र लगा दीजिए, आप अपने पे जीवन तंत्र लगा दीजिए। तो सुषमा जी मर गई तो उनको उठा देना था ना, कहाँ है फिर तंत्र आपके पास? आप तो साधु हो, शक्ति होनी चाहिए। साधु तो बहुत पावरफुल होते हैं, तांत्रिक तो बहुत पावरफुल होते हैं, कहते हैं जी मुर्दे को उठा देते हैं, आप उठा दीजिए ना। बेहुदा बातें, कोई सर नहीं पैर नहीं, कोई बात नहीं, कैसी बातें की जाए? ये चलेगा देश? ऐसे चलते हैं देश? मतलब कुछ भी बोल दो पब्लिक में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे प्रधानमंत्री की तो बीमारी है बोलने की, उनको तो शायद मैं तो कह समझ लिया बीमार आदमी है वो। उनको बिना बोले आप जरा सी बात से पूछ लो, 1 घंटा लगा देंगे उस बात का जवाब देने में। तो भैया ऐसे आदमी से ऊपर वाला ही बचाए, मुझे ऐसे आदमी से बात नहीं करनी। उसे बीमारी शायद, उनको रोटी हजम नहीं होती है, उनको नींद नहीं आती ज्यादा बोले नहीं तो। 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ नहीं कुछ करना ही है उन्होंने, बात बोलनी है, दूसरे को समझ आए ना आए, क्या बोल रहे हैं उन्हें भी शायद याद नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जो ज्यादा आदमी बोलता है ना, उसकी आदत होती है याद नहीं रहता उसको उसे क्या बोला, और लिखने का तो मतलब ही नहीं, पढ़ने का तो मतलब ही नहीं है। तो भाई अब क्या करें, अब हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में है। अब इसे क्रिटिसिज्म समझ लो या नहीं समझ लो, सच्चाई है। अगर एक प्रधानमंत्री बोलता ही रहे तो काम कब करेगा वो? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। काम जो करता है उसको सोचना पड़ता है, कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, एक बात को 10 बार सोचना पड़ता है, उसके प्लस माइनस पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं कि इससे इफेक्ट हमारे देश पे क्या होगा, हमारे किस पब्लिक को क्या होगा, ये सब सोचना होता है। उसके बाद कोई रास्ता मिलता है। लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ रास्ता पहले ढूंढ लो, प्रॉब्लम को बाद में आने दो। यही तो किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर में। इन्हें पता नहीं था हमने क्या किया है, बस कर दो, देखा जाएगा जो होगा। जो लोग पहले करना चाहते हैं बाद में सोचना चाहते हैं, उसको भी सही नहीं होता काम। ठीक है, कभी तुक्का लग गया, मान लेते हैं भाई हो गया, गॉड ब्लेसिंग से हो गया, आपने जो किया वो सही हो गया, वो अलग चीज होती है। लेकिन वो फार्मूला नहीं है। आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं किया, लाके ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ पता नहीं लग रहा इधर जाएंगे इधर जाएं या इधर जाएंगे इधर जाएं, ऐसी जगह पे लाके आपने खड़े कर दिया देश को। तो उस काम का क्या फायदा? कानून बदलो नहीं बदलो, इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप लोगों के दिलों में नहीं बसोगे, संविधान भी बेकार है, ये कानून भी बेकार है। अगर आपके दिल साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, आपका दिमाग साफ नहीं है। वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, संविधान भी एक सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है, आपकी गंदी आदत है, आप सोचते ही गंदा है, तो बेचारा संविधान भी क्या कर लेगा? वो तो एक बुक है, एक फ्यूचर लिखा हुआ है कि आप ऐसा जिएंगे, आपके ये अधिकार होंगे या नहीं होंगे। उसको आप गाइडेंस की बजाय, उसकी सेवा लेने की बजाय आप अपनी एडगिरी दिखाए जा रहे हैं। हम ये करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मनुष्य, पता नहीं क्या क्या बकवास की जा रही है। आप कौन होते हैं भाई मेरे पे इम्पोज करने वाले? अपना हट ये बताओ पहले मुझे, मैंने किसको हक दिया है? मैंने जो वोट आपको दिया है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं दिया है, मैंने तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिया है, इस संविधान के हिसाब से वोट दिया है। तो आप फालतू की बकवास क्यों कराते हैं लोगों से? आप कहते हैं हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे, दोबारा करिए ना, किसने रोका है आपको? और कौन करेगा और क्या करेगा? किस चीज की रिजर्वेशन, किस चीज का आरक्षण? पहले ये सोच लो। आपका आरक्षण सिर्फ एक ही चीज पे है कि सरकारी नौकरी पे, बस। मतलब सारी चीज सरकारी नौकरी के ऊपर जाती है आके। मंदिरों में आरक्षण किसका है? कोई बताएगा? कौन करता है मंदिर में काम? उसके पैसा कौन लेता है? तो क्या करते हैं वो लोग? उसका भी तो आरक्षण होना चाहिए। वहां पर एक पंडित ही क्यों बैठे भाई? ये सफाई कर्मचारी क्यों नहीं मंदिर में बैठ सकता? वो भी नहीं भगवान का पुजारी बन सकता? वो पैसे वो भी नहीं खा सकता? बताइए। वो नहीं बताएंगे आप, क्योंकि वहां आपकी दुकान चल रही है, वहां आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वहां क्यों बताएंगे आप कुछ नहीं करते और खूब खा रहे हैं, हलवा पूरी खीर सब खा रहे हैं वहां बैठ के, और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हीं गरीबों से आप चढ़ावा ले रहे हैं, उन्हीं से पैसे ले रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं बाद में जाके। तो इसको समाज को तोड़ना कहते हैं। जितने दलित हैं, जितने ये वाल्मीकि या दूसरे जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया? इनको आपने खुंदक दिला दी, आपने इनका मंदिर तोड़वा दिया, कहा जी बहाना ले लिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अरे सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। आप और चीजों पे ऑर्डर ला सकते, इसमें भी ला सकते थे।
इस पे भी आप रिपील कर सकते थे, अपील कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? रात रात में उड़ा दो जी। ये देश है। एक चीज 600 साल की बनी हुई है। आप ये दुकान तो नहीं लगी थी वहां पे कि 1-2 साल में लगी है। 600 साल पुराना या 500 साल पुरानी जो जगह है, जो मंदिर या जो भी बना हुआ था संत रविदास का, आपने उठा के गिरा दिया उसको। कहा जी इसका कागज नहीं है, कोर्ट में से सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ऑर्डर गिरा दो उसको। भैया कागज कौन से मंदिर के, पहले तो मुझे कोई ये बता दे। आपके राम मंदिर के कागज हैं जिसके लड़ रहे हैं आप? वैष्णो देवी का कागज है? नंदा देवी का कागज है जो वन में बने हुए? और कौन सी देवी का कागज है? सब गिरा दो फिर आप। ऐसी बचकाना बातें, इलिटरेसी की बातें, गंवार बने की बातें हैं ये सब। अब हमारा देश मंदिरों की वजह से चलेगा या मस्जिदों की वजह से चलेगा या हमारे लोगों की वजह से चलेगा? मतलब मंदिर, मस्जिद, दलित, ये इन्हीं में रह गया देश। हम किधर जा रहे हैं? दलित इंसान नहीं है क्या? नाम दलित होने से क्या होता है? काम तो आपसे ज्यादा कर रहे हैं वो। अगर एक आदमी सीवर लाइन में उतर के आपकी सीवर लाइन साफ करता है तो वो एक पंडित से ज्यादा जिम्मेदार काम करता है। नहीं तो पंडित करके दिखा दे, उतरे जाए पंडित, मंदिर के पुजारी को लाइए, सीवर लाइन में उतारे कि साफ करके आ, करेगा? तो जो आदमी वो काम कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, वो बड़ा है कि आप बड़े हैं? बताइए मुझे। आप लीजिए रिस्क लाइफ की, वो भी ले रहे हैं। आपको तो मंदिर की घंटे बजवा के, पैर छुआ के, पैसे लेके, दक्षिणा के और प्रसाद लेके ऐड और खूब खाना ठूसना है और फिर कहना है ये हमारे हम हाथ नहीं लगाना भगवान की मूर्ति। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ में क्या है? आप जाइए किसी मंदिर में, भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देते आप। और तुम्हें किसने हक दिया? ये तुम्हारी औकात क्या? इंसान हो तुम और क्या हो? ठीक है, तुम वहां बैठे हो थोड़ी स्वच्छ जगह पे, इसलिए कि आपको अपने हक समझा है, आप दे दो दूसरे को हक, उसमें क्या बात है? अगर एक सफाई कर्मचारी वो क्यों नहीं कर सकता काम जो आप कर सकते हैं? उसमें ऐसा क्या है? आपको भगवान ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया कि आप ये काम करेंगे? एक हक बना लिया आपने, बस मेरा काम है, मैं हाथ देना इसमें। मेरी तो कल कब झगड़ा हुआ था इससे, उधर कलकत्ता में मैंने टच कर दी काली की देवी। ओ तू जंगली आदमी है, साले थप्पड़ दूंगा मुकास करेगा तो। तू कौन? तू भगवान है? तू भगवान बना मत है? अरे सीट मिलकर मेरे को बेसलाई करेगा? भगवान ने मुझे भी बनाया है, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे को हक है उसके रहने का। तू कौन है? तू रुकने वाला कौन है मुझे? ये बात होती है सोचने की। हर एक आदमी ने अपना अधिकार समझ के रखा है कि मैं ही हूं। क्यों भैया मैं पंडित के क्यों फेवर करूं? पंडित कौन होता है? जैसा तू आदमी ऐसा मैं आदमी, फर्क क्या है दोनों में? पहले पंडित बन के दिखा दे मेरे को। घूम के आ, पहले पंडित होते थे ऋषि मुनि जो अपनी शक्ति से घूम के आते थे पूरे सौरमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को, वो होते थे पंडित। उनकी अपनी आत्मा की शक्ति इतनी डेवलप होती थी। आपकी तो आत्माएं मर चुकी हैं लूट खसोट पे। चोरी, लूट खसोट, बेईमानी, डकैती, कैसे, इन पे तो आपकी आत्माएं चलती हैं। अपने बाप को लोग मार देते हैं, अपने भाई को लोग मार देते हैं। आजकल तो ये हो रहा है, आत्माएं ऐसे काम कर रही हैं। तो आपकी क्या वैल्यू है? खाली प्रसाद चढ़वा के कपड़े भगवा पहनने से कोई पंडित नहीं बन जाता, और कोई वैसे पंडित बनने से कोई मौलवी नहीं बन जाता। उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। क्या तपस्याएं की हैं आपने, बन गए पंडित आके। मेरा बाप पंडित था, मैं भी पंडित, मेरा बेटा भी पंडित। मतलब आपके खानदान में तो रिजर्वेशन चले जा रही है, और उसको जरा सी मिल गई सरकारी की तो शुरू में जा रहे हैं आप। ठीक है, आप मंदिरों को खाली कर दीजिए ना, हम बैठेंगे मंदिरों जाके। जो गरीब लोग हैं वो बैठेंगे, जो कूड़ा उठाते हैं वो बैठाएंगे हम तो। वो करेगा भगवान की सेवा, आप कौन होते करने वाले? देंगे आप? बेकार की बातें करते हैं। गिरा दो मंदिर। अरे यार इतनी शर्म नहीं आई तुमको? उसका मंदिर तुमने गिरा दिया, अब तुम्हारी कोई मस्जिद गिरा, तुम शोर मचा रहे हो इतने साल से कि बाबरी मस्जिद गिरा दी। राम मंदिर बना हुआ तो क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद गिरा दी हमने। क्यों गिराई तुमने भाई? तुम मंदिर गरीब का भी गिराओगे, तुम अपना मंदिर बनाओगे, बस यही काम रह गया है। देश जाए भाड़ में, समाज को तोड़ दो, सेक्शन कर दो, लड़ाई करा दो, यही है क्या सरकारी काम? यही होता है काम? हिंदू राष्ट्र बना दो, इसको उससे बढ़वा दो, उससे बढ़वा दो। गांधी ने तो ये नहीं कहा था करने के लिए, और सुभाष में नहीं कहा था। ये किसने कहा था? किसने कहा था ऐसा करने के लिए? शर्म आती है ऐसे ऐसे लोगों पे जिनकी सोच इतनी गंदी हो चुकी है। मतलब लोगों को भिड़वाए जाओ, लड़वाए जाओ अपनी गाड़ी के लिए, अपनी गाड़ी चलनी चाहिए बस। कभी 370 हटवा दो, उनको तंग कर दो, कभी नागालैंड को अलग कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो। कोई ईवीएम की बात करे तो कोई और बात ले आओ, कोई दूसरी बात करे तो उसके लिए और कोई बात ले आओ। यही चल रहा है।
ये साइंटिफिक वर्क है देश का। हमारा विज्ञान ऐसे जा रहा है कि लोग तंत्र से मर रहे हैं। अब तो मुझे डर लगने लगा है कहीं और भी 2-4 ना चले जाएं। मारक तंत्र चल रहा है, कांग्रेस लगा रही है, अपोजिशन वाले लगा रहे हैं। मारक तंत्र की जय हो भैया, जिसको मारना है मारक तंत्र लगा दो, बात खत्म हो गई है। क्यों इलेक्शन करने के चक्कर में कुछ हराना है, उसको जिताना है, बैठे बैठे मार दो। और ये मैडम तो जो साधु मैडम बोलती है अपने आप को, ये तो वैसे ही शराब दे देती हैं, ये तो शराब से मार देती हैं। तो भैया ये पाकिस्तान के मार देना, शराब से मार देना, जो तुम्हारे दुश्मन बैठे सबको मार दो। ये ताकत है तो तुम्हारे शराबों में इतनी, क्या जरूरत है सब लड़ाई करने की, कुछ करने की, वैसे मार दो, अभी चुप हो जाएगा, चला जाएगा दुनिया छोड़ के। आप में इतनी शक्ति, इतने बड़े भगवान है आपको, हद है। ऐसे ऐसे लोग सत्ता है बैठे हैं, लीचड़ किस्म के लोग, जिनका कोई बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट बुद्धि है। इसे कहा जाता है भ्रष्ट बुद्धि संस्कृति में। जिस बुद्धि में सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, बकवास करने की शक्ति पैदा हो जाए, ऐसी भ्रष्ट बुद्धि होती है, जिसका कोई यूज नहीं उस बुद्धि का। तो ये हमारे आज के ऐसे धन्य नेता हैं जो देश को चला रहे हैं, लोकसभा को जो बैठे हैं। और हमारे साहब बजाय उन लोगों की चिंता करने के जो गरीब, जिनको दबा के रखा है 1.25 करोड़ लोगों को, उनकी चिंता उनको नहीं है। वो सोच भी नहीं रहे बेचारे क्या खाते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, दवाई मिल रही नहीं मिल रही। उनको 3 हफ्ते से दबा के रखा हुआ है, सांस नहीं लेना, मर जाना है। हम दुनिया घूम रहे हैं, बात करें, वो सॉल्व करेगा तो नहीं प्रॉब्लम। हद है यार, ट्रम्प करेगा सॉल्व, कौन करेगा सॉल्व? यूए वाला करेगा, बहरीन वाला करेगा, प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व वो करेंगे। क्या बताने गए उनको? गलत आपने किया है, पाप पूछने उनसे गए हो। अरे अपनी प्रॉब्लम समझो, सॉल्व करो उसको। अगर तुमसे गलती हो गई तो प्रॉब्लम खत्म करो, हटा दो गलती को। अगर आपसे गलती बाई चांस हो गई है तो उसको ठीक कर लो, बस माफी मांगो लोगों से, गलती होगा भैया हमसे। नहीं, वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको वोट लेने उन लोगों से जो जो खुश हो रहे हैं। आपका एक ही मंजिल है, वोट। ये देश है, एक कम्युनिटी को, एक पार्ट को खुश करने के लिए आप दूसरे पार्ट को मार दो, उस पार्ट को खुश करने के लिए उस पार्ट को मार दो। यही राजनीति होती है क्या? आपको वोट से मतलब है, कैसे भी आए, नोटबंदी करके आए, जीएसटी लगा के आए, 370 हटा के आए, या जैसे मर्जी आए, मेरा वोट जिंदाबाद। और एक कहता है मारक तंत्र से आए, वो भी अब तो खूब लगेंगे मारक तंत्र। मैं तो कांग्रेस को लिखूंगा, मारक तंत्र अगर आपने लगाए तो लगाइए। किस देश में बैठे, हद है। मोदी कहते थे कि हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं अभी हम किस देश में पैदा हुए। अब पता लग रहा है सच ही कहते हो हम किस देश में, मारक तंत्र वाले देश में। अब तो उसका नाम बदल के भारत और मारक कर देना चाहिए, भारत मारक तंत्र। अब हंसी आती है अपने आप पे, जोक भी निकलते हैं मुंह से जब सोच ऐसी होती है तो। Really very bad it is, believe me. We are not really scientific people, we are not mathematical people, we are not logical people. We are people depending upon these pandits and shastris and these sadhus who have no work except to suttabaji, except to darubaji, rape, asharam, Ram Naim, or what their name I don't remember. All babas are babas like that. All babas, Arabpatis, having big Mercedes, having many servants, enjoying life, and they are babas. This is country of babas, this is country of sadhus, this is country of dacoits, this is country of cheats, this is country of liars, and this is country of rubbish politicians. This is my Bharat. Jan Gan Man Adhinayak Jaya Hai Bharat Bhagya Vidhata. Jan, public, Gan, republic, मन कॉन्शियस, जनगण मन अधिनायक लीडर, भारत भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक जय हो, दे आर ऑल जय हो, वी आर हेलिंग देम, एंड भारत भाग्य विधाता, दे आर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, दे आर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर डेवलपर ऑफ भारत। हम भारत इनसे बनवाएंगे। अब एनालाइज करेंगे तो समझ आएगा ना, खाली गीत में गा देने से बात बनती है ना। जनगण खड़े होकर गा दिया जी हमने 52 सेकंड के अंदर ये पूरा कर दिया। अरे मतलब भी तो समझो भाई, गाने से क्या होता है। वंदे मातरम चिल्लाते, वंदे मातरम मतलब तो समझो, भारत का मतलब तो समझो। मतलब आप किसी का नहीं समझते, गा दो जी। यही कमी है, हमने धर्म पढ़ा है, हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी भी करते हैं, उनके मतलब भी तो समझ लो। मतलब नहीं समझना। कोई फंक्शन होता है, चलो जी दिए जला दो 4 सरस्वती देवी के नाम में,
सरस्वती देवी के बारे में नहीं जानेंगे वो क्या है, लक्ष्मी के नाम में चला तो लक्ष्मी के बारे में नहीं जाना, वहां पैसा आता है इतना तो पता है उनको। अरे भैया उनको समझ तो लो पहले वो है क्या, जब तक आप समझोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। करते लोग पूजा, पूजा बेकार है अगर आपको समझ नहीं आए क्या कर रहे हैं। तो शादी के फेरे लगवाते हैं, शादी जो करो उनको पता ही नहीं होता उन्होंने क्या मंत्र बोले, शादी हो गई बस खत्म बात, तलाक की लाइन में जाओ। यही हो रहा है, अपने से मतलब बस मंत्र पढ़ लिए तो पढ़ लिए। अरे मंत्र का कोई मतलब होता है, वो एक फार्मूला होता है, मजाक नहीं है, सूत्र है वो एक कंप्यूटर है, उसमें लिखा गया है ये कमांड है इसकी, आपके माइंड में जानी चाहिए, नहीं जाएगी। कैसे जाएगी आप सोचना नहीं चाहते। हम तो अंग्रेजों की औलाद जो ठहरे, या अंग्रेजी में पढ़ लो, अगर अंग्रेज की औलाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू में पढ़ लो, फारसी में पढ़ लो, सब मिलेगा। और मिलेगा तब जब मांगोगे। आप तो मेहनत नहीं करना चाहते, मत करो। अरे ये बना बनाया देश मिल गया आपको, आज़ादी के टाइम मिला, फिर डेवलपमेंट हुई वो मिला, और उसको तोड़ना शुरू कर दो। हम सेलिंग कंपनीज, हम सब बेच रहे हैं सरकारी कंपनियां। भैया क्यों बेच रहे हो, कोई पूछे इनसे। चल नहीं रही, घाटे में है। क्यों घाटे में है, आप क्या करोगे बेच के इनको, और जो लेगा वो क्या करेगा भाई, वो बिजनेस करेगा, इसको ठीक करके बेचेगा, आगे बढ़ाएगा। तो भैया तुम कौन हो, तुम हैंडीकैप्ड हो क्या, देश में इंजीनियर नहीं है, आप सरकार नहीं हो, आप उसको ठीक क्यों नहीं करते, किसका काम है ये। अगर एक बाहर का आदमी, प्राइवेट आदमी लेके उस कंपनी को ठीक करके उसको दोबारा यूज कर सकता है, तो आप किस खेत की मूली हैं, आप किस लिए बैठे हो सीट पे। ये सीट आपको क्यों दी गई है, इस सामान को बेचने के लिए दी गई है। हम देश नहीं बिकने देंगे, ये देश नहीं है क्या बिक रहा, जो बेचारा कौन बना के गया, कितने साल पहले बना के गया, वो क्या सोच के बना के गया कि एक साहब आएंगे उसको बेच देंगे। पागल था जो बना के गया। अगर मेरा पिता बना के जाए मेरे लिए मकान, और मैं हरामखोर निकलूं, मैं काम ना करूं, मैं चोरी करके खाना चाहूं, मैं मकान भी बेच दूंगा, चलो बाप के फिर देखेंगे, अभी तो बेच के खा जाते, शराब पीनी है, खा जाओ, जुआ खेल रहे हैं। हम क्या उनमें से हैं, लगता तो ऐसा ही है। शर्म आती है मुझसे ऐसी गवर्नमेंट है जो बनी बनाई चीज को बेच दे। अरे कुछ करके तो दिखाओ, दूसरे के किए पे क्यों बेच के खा रहे हो। ऐसे मुझे तो शर्म आती है ऐसे सरकारों पे, और कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई विरोध करने को तैयार नहीं है। बेचने तो यार मेरे बाप का क्या जाता है, यही सोच रहेगा ये। जिस देश का युवा ऐसा हो जाए, मैं सच बता रहा हूं, जिस देश की पब्लिक ऐसी हो जाए, उस देश को किसी दुश्मन पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, आप तो वैसे ही टूट रहे हो। पाकिस्तान का क्या होना उसको भूल जाओ। लेकिन हमारा कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है आज की तारीख में, हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम ही दुश्मन है अपने। सच बात तो यही है। हम ना कष्ट सहना जानते हैं, ना संघर्ष करना जानते हैं, ना लड़ना जानते हैं अपने आप से, बस आसानी से आ जाना चाहिए। सरकार वही होती है जैसी पब्लिक होती है। अगर आज की सरकार जैसी कंडक्ट कर रही है, क्योंकि पब्लिक भी ऐसी ही है, इसलिए सरकार ऐसी बनी है। पब्लिक को पता है कि सरकार को पता है, पब्लिक के बारे में अच्छी तरह जानता है जो भी सरकार में आता है। अरे पब्लिक कुछ नहीं करेगी, एक दो दिन ठोक लाएगी, उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। और सच बात है, सच बात है। नोटबंदी करी, डिमोनेटाइजेशन की, सब खत्म कर दिया, उसमें कोई पूछ नहीं रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। एक प्राइम मिनिस्टर अपनी दादागिरी दिखा के एक ऐसा गुंडा काम कर गया, ऐसा सत्यानाश काम कर गया देश का, कि आज भी तड़प रही है इकोनॉमी अपना सांस लेने के लिए, और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ले जाओ आरबीआई से पैसे, अरे रिजर्व फंड दे दे यार, और दे दे, खर्च देते हैं। तुम अपना क्या कर रहे हो। मैंने फिक्स डिपॉजिट ही खाना है, तो मैंने फिक्स डिपॉजिट क्यों को था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है। अरे कहीं तो कुछ करके दिखाओ, कहीं भी कुछ नहीं कर रहे। बस टीवी वाले पाकिस्तान बौखला आ गया, पाकिस्तान एक देखो वो डर गया, तो उसका पेशाब निकल गया और मर गया, ये न्यूज है। बजाय ये दिखाने के कि हम क्या कर रहे हैं अच्छा काम, वो नहीं दिखाएंगे। वो मर गया, डर गया, वो ड्राइवर बना दिया उसको। क्या इंसान हो तुम, तुम्हें किसने जर्नलिस्ट बना दिया, तुमने डिग्री की थी या नकल मारी थी, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, तुम्हारी चैनल इसी बात चलती है, ये प्रोफेशनलिज्म है।
मतलब गंद दिखाए जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाया जाओ और कहना चाहिए हम चैनल इंटरनेशनल चैनल, और खुद ही अवार्ड बनाओ और खुद ही ले लो फिर जी हमको ये अवार्ड मिल गया, खुद ही पैसे दो, खुद ही अवार्ड बनाओ और आपस में मिलकर एक बार मैं ले लूँ, एक बार तुम ले लो, पूलिंग कर लो, क्या फायदा उसका। तो मुझे ये कहने में दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि यार कंट्री को कंट्री समझो, अपना देश है, हमारे अपनी डेमोक्रेसी है, अपना राज है, पब्लिक अपनी है, सारे अपने हैं, भूल जाओ धर्म को, भूल जाओ समाज को, देश के लिए सोचो। बार बार थक गया मैं कहता हूँ, कोई देश के लिए नहीं सोचता, पॉलिटिक्स के लिए सोचते हैं। मोदी भगत बने हुए हैं, उनसे वो बात ही करना बेकार है। वो कोई बात कहे तो गलत में भी वो तारीफ कर देंगे और झूठ में तारीफ करते करते हैं, हर बात में तारीफ करते हैं। हम तारीफ करने के लिए नहीं पैदा हुए, मैं बता देना चाहता हूँ सबको। हम किसी राजनीतिक की पार्टी के आदमी की तारीफ मैं तो नहीं करूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, एहसान नहीं कर रहे मेरे पे। आपको पैसा दिया जाता है नेता लोगों, आपको पोस्ट दी जाती है, आपको संविधान को फॉलो करना है, उसकी रक्षा करना भी आपका दायित्व है। आप काम नहीं करें तो मेरे को आपकी जरूरत तो नहीं है। भक्तों को होगी, भक्त रखते हैं उनको। मुझे तो ऐसे नेता नहीं चाहिए, वो प्रधानमंत्री या कोई भी हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो। काम करो काम, बस एक ही बात याद रख लेना, फ्री नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे फ्री, एहसान नहीं कर रहे किसी पे। और जो डर जाता है हमें उसकी जरूरत नहीं है। अपने घर बैठ जाके डर गया तो डरने की क्या मतलब है। देश के लिए काम करो, गौरव से करो, देश के लिए कर रहे हैं, तब देना सीधा छोड़ा जा रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। नेताओं से डरना, इन नेताओं से जो खुद डरे हुए हैं, क्या कर लेंगे तुम्हारा ये नेता, ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये मिनिस्टर, क्या औकात है इनकी। हमने बनाया इनको, इन्होंने नहीं बनाया। अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे ऐश करते हैं। हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो कुछ करते नहीं है बातों के अलावा। हम खून मेहनत की कमाई, दिन रात काम करती है पब्लिक, तब पैसे कमाती है। कोई बाहर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, दिन भर धूप में काम करते हैं, कुछ करते हैं। वो लोग की मेहनत की तुम कमाई खा रहे हो और एहसान दिखा रहे हो हम पे। अरे इंजीनियर कितना पढ़े लिखे आता है, उसके पास काम सीख के थोड़ी सी सैलरी मिलती है उसको, उसमें से वो पैसे देता है आपको, और आप एहसान दिखा रहे हैं उसको। वोट हमारा, गवर्नमेंट तुम्हारी नहीं चलेगी, याद रखना। ये आजकल ये नारा बना हुआ है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, काम तुम्हारा चलेगा। हम वोट देंगे आपको काम के लिए, राज करने के लिए नहीं देंगे। राज गए, राज हमारा है। वी पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमारा राज है, तुम्हारा राज नहीं है। तुम सिर्फ गवर्नेंस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो देश की, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जैसा हम कहेंगे वैसा मानना पड़ेगा, ये कानून है इस देश का, नियम है इस देश का। हम श्योर है, हमको जस्टिस जो है मिलनी चाहिए, हमको हमारे हक मिलने चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, तो अपना काम करना है। हमें इस देश के मालिक हैं और तुम वैसा करोगे जैसा हमने लिख के दिया है। बस ये मान लीजिए, अपने को मालिक समझने की भूल नहीं कर लेना। और ये तंत्र मंत्र यंत्र, ये बकवास बंद करो, बहुत हो गया, बहुत देख लिए तंत्रों को, देख लिए यंत्र, कुछ काम नहीं आता, फालतू की बकवास है। जो तंत्र लगाता है पहले अपने ऊपर लगा के देख ले, उससे कितना फायदा होता है। इससे चल दिए तंत्र की बात करने। गंवार लोग, पढ़े लिखे गंवार, धर्म के पुजारी, धर्म को समझते नहीं, साधु बने में, साधु का मतलब नहीं जानते, क्या फायदा। धर्म को बदनाम करके रख दिया, देश को बदनाम करके रख दिया। पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते, बकवास करते हैं। किसी को मार दो, किसी का कत्ल करा दो, किसी को लूट लो, किसी का रेप कर दो, यही देश हो गया है। शायद देश भी यही है और लोग भी शायद यही चाहते हैं, ऐसा लगने लगता है कई बार सोच में आता है ये। जिस देश की पब्लिक अपने बारे में नहीं सोच सकती, अपने बारे में सीरियस नहीं हो सकती, सच बता रहा हूं, उस देश का समझ लो विनाश चल रहा है। जब हर आदमी डरने लग जाए, हर आदमी सोचने लग जाए, छोड़ो यार मेरे को क्या मिलने वाला है, मरने दो, घर में गलत काम करने दो उसको। जब आदमी हर चीज से डरने लग जाए, फिर वो आदमी नहीं रहता, आदमी डेड हो जाता है। आपकी सोल सो जाती है, आत्मा सो जाती है, मृत्यु ही है, वो मृत्यु है एक तरह की। तो डर जाए। सच आदमी कभी नहीं डरेगा, याद रख लेना। कौन डरता है? झूठ वाला डरता है, जिसकी नीयत खराब होती है वो डरता है, जो गलत काम करता है वो डरता है। जो साफ दिल का आदमी होता है वो कभी नहीं डरता। उसको फंसा भी दोगे तब भी कुछ नहीं कोई बिगड़ पाएगा उसका, क्योंकि वो साफ है। और सत्य पावरफुल होता है, झूठ पावरफुल नहीं होता है, सब जानते हैं इस चीज को। सत्य में वो जयते हमारा प्रिंसिपल है देश का,
जीतता सत्य ही है, चाहे 1000 बात जीते, 1000 झूठ के बाद जीते, झूठ कभी जीत नहीं सकता क्योंकि वो झूठ है। और हम झूठ के रास्ते पे चल दिए हैं, हम फेक के रास्ते पे चल दिए हैं, हम गलत रास्ते पे चल दिए हैं। उस रास्ते से वापस आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, समुद्र में डूब जाएंगे। हमारा पैसा ये लुटेरे खाएंगे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट खाएंगे, ये पॉलिटिशियंस खाएंगे, ये लूट के हमें ले जाएंगे। और हो सकता है ये हमारे देश को ही बेच दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। बेच रहे हैं, ऑलरेडी बेच रहे हैं, बिक रहा है और हम खड़े देख रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या होगा? इन्होंने बनाया तो कुछ है नहीं, बेच दो। अरे एक चीज बना के तो दिखा दो। अपने ऑफिस तो तुमने बना लिए, देश के लिए क्या बनाया? अपने ऑफिस तुमने खूब बना लिए ईवीएम की हेराफेरी करने के लिए। अब उनके अंदर ले आके ईवीएम रख दो और वहां कर करके जाके रिप्लेस कर दो, ये तो तुमने कर लिया। देश के लिए तुमने क्या किया? हाँ, देश के लिए सीट जरूर छीन ली आपने, प्राइम मिनिस्टर की छीन लीजिए, तो काम तो करो यार, करके तो कुछ दिखाओ। इंदिरा गांधी को क्यों याद किया जाता है आज? उसने कुछ किया था। जवाहरलाल को क्यों याद किया जाता है, जिसको आप गाली देते हो? क्योंकि आप गाली देते हो तो उसका नाम ना हो जाए, उसका नाम ही खराब कर दो। उसका नाम खराब नहीं करोगे तो हमें कोई वोट नहीं देगा। अरे आपके नाम खराब करने से जवाहरलाल की सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। काम बोलता है आदमी का। आपने भाखड़ा डैम नहीं बनवाया था, जवाहरलाल ने बनवाया था। आपने नहरें नहीं खुदवाई थी, जवाहरलाल ने खुदवाई थी। आपने स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए थे, जवाहरलाल ने बनवाए थे। जवाहरलाल के टाइम में मैं भी इंजीनियर बना, मैं भी स्कूल गया, मैं भी पढ़ाई, कम पैसे में पढ़ा के आप सोच नहीं सकते मैं कैसे कहूँ जवाहरलाल गलत था। आप कहते रहिए, आपके कहने से क्या होता है? गांधी को गाली दीजिए, जवाहरलाल को गाली दीजिए, आपका एक स्टाइल है। एक को गाली, एक को सर पर बिठा लो। जवाहरलाल को आप गाली दे देंगे, पटेल साहब को सर पर बिठा लेंगे। ये आपका एक फार्मूला है, डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस के आदमी को ही डिवाइड कर दो, तू अच्छा है तू खराब है। अरे आप अपना आदमी दिखाइए ना, आपको कांग्रेस से क्या लेना देना है? कांग्रेस आपकी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस देश की पार्टी थी और आप देश के मालिक नहीं थे, आप देश के हिस्सा नहीं थे, आप अंग्रेजों के अजरों के सपोर्टर थे। तो आपको देश के आदमी से क्या लेना है? हम पटेल को अच्छा कहें, हम गांधी को अच्छा कहें, उसको आपको बीच में क्या आने का मतलब है? आप तो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, टूट जरूर जाएगा देश, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये देख लीजिएगा, मेरा वादा है आपको। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आप इस देश के टुकड़े जरूर करा देंगे। उसका भी कारण है कि आप जो चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। रहेगा ये भारत ही। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लेना, आप अलग हो सकते हैं। आप जो 10-15% लोग हैं जो दादागिरी दिखा रहे हैं, ठीक है, आप अलग हो जाइए। यही सोच है लोगों की। आप जो चाहते हैं वो कभी होने वाला नहीं है और कोई कभी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, याद रख लेना। आने वाले जाते हैं और नए नए लोग आते हैं। अच्छा काम करो। आप पावर में आए हो, आपके अगर सत्ता में लोगों ने बिठा दिया है तो कुछ ऐसा करो कि लोग आपको अच्छा कहें। गाली गुत्ता ये, और आपके आदमियों की बात ही छोड़ो, भक्तों की, उनको तो उल्टी सीधी बकवास आता है कुछ नहीं है। उनसे कोई क्वेश्चन करो तो पता उसके बारे में होता नहीं है। उनकी मैं कोई बात नहीं करने चाहता, क्योंकि जिसको पता ही बेचारे को कुछ नहीं है उसकी बुराई करने का भी फायदा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-20 साल 25-25 साल के, आपने पैसे देकर उनको बिठा रखा है IT सेल में। अरे इसके कुछ भी जवाब देते रहो, वो लिखते रहते हैं। चलो उनको कुछ 3-4-10-20 हज़ार मिल जाते हैं, उनकी गाड़ी चल जाती है, कोई बात नहीं, हमें उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। बच्चे बच्चे होते हैं, जब एक्सपीरियंस होगा जिंदगी में, कुछ सीखेंगे, गलत गिरेंगे, चलते चलते अपने आप ठीक खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने तो उनको अब्यूज किया ना। मेरा कहने का मतलब जब आदमी को चांस मिलता है तो करके दिखाना चाहिए, सोच के काम करना चाहिए। जो सोच के काम नहीं करता वो गिरता है। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि उसके बाद अब आप आज की तारीख में आपके हल नहीं है उसका, आपका हल नहीं है उसका। जितने भी आपने डिसीजन, किसी का हल नहीं है आपके पास। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका आपके आज तक हल नहीं है, उसको कैसे रीइंस्टेट करें। आपने GST का लिया, मार्केट डाउन कर दिया आपने 370 का डिसीजन लिया, अब आपको पता नहीं क्या करें इसका आगे। तो ऐसे आपने रवि की 10 मंदिर गिरा दिया, उसके बाद आपके पास कोई फैसला नहीं है। पहले गिरा दो, बाद में प्रॉब्लम कर दो, वो लोग लड़ेंगे मरेंगे, फिर कुछ देखेंगे बात करके। यही आपके फार्मूले हैं। देखिए, इसको मैं क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काम करो कंस्ट्रक्टिव, जिसमें दूसरे को नुकसान ना हो, सोसाइटी डिवाइड ना हो। यू आर डिवाइडिंग सोसाइटी, you are dividing nation, you are disseminating hate, you are spreading hate, and you are intensifying hate. This is not good for nation, this is bad for nation.
This is very much important to understand. If you don't understand, you will lose, country will lose, public will lose, and they are losing already. Jobs are not available, young are losing, educated people are not having jobs, they are losing. Our professionals are not working very good, they are losing. We are losing everywhere. Why have you created such scene? That's my issue. Well, I'm not going to say something else other than this, except we will talk of constitution. I want to talk about high court judiciary, but I could not find time, and it's already 1.5 hours. So I will not pull it further, because it's no use to talk and talk for nothing. But I will simply say that, please, government, you are in government, you have to take care of this country until you are in seat, till you are in seat, but don't create problems for this country. This country people are emotional, sentimental, and you are master of sentimentalism to create emotion in them. This is your number also. I know it. I know about numbers very well. It is my subject, and I know that you are of that nature. But don't spoil this country. Today you can create problems. Then we need some people who can solve that, because we know you very well now that you are master of creating problem, but you cannot solve. You don't have capacity to solve. It's very understood. Our government is master of creating problems, but they are not able to solve this eligibility, this qualification they do not have. So we need someone else to solve that, and that will be solved only when you go out. That's it. It is now more than 5 years you do not solve anything except creating problems. So you are a problem creating government. You don't know solutions. You don't have formula. You don't have vision. You don't have anything. Okay, no problem. It takes time, but there are other people who can come and solve that. Don't worry about that. Public can take its care. People are not dependent upon you alone. You are given a chance and you are enjoying that chance. Enjoy it. No issue. Enjoy it. But don't show our weakness to foreign countries. Don't show our weakness. Solve problem and then tell what we have solved it. That is called greatness. We don't need awards from some country. No, no need of that awards. You need awards from our people, not from foreigners. They can give award to anybody's fashion, India's fashion. I give the award because I want some favor from you. They send me, and Palestine also gave you some award. They wanted some favor from you. It happens. It happens all over the world. Means this is a style of business. This is a promotion technique, nothing else. We don't want that technique. Well, thank you, gentlemen. I close it now. Jai Bharat and Vedant.